Good morning. Good morning, Namaskar. Good morning, everybody. This is Engineer Suraj Singh speaking from Bharat, India on this is November 27, 2021 Saturday. मैं भारत इंडिया से बोल रहा हूँ इंजीनियर सूरज सिंह। आज नवंबर 27, 2021 शनिवार and title of talk is same as before, civil field engineering, engineers quality and construction, designs, methods, contracts, disputes, organizations and all topics. We are responsible. We are responsible and we should be responsible in every part of our life, every act that we conduct in our life. Ultimately, you have to achieve what is required, and quality system stands valid all time if we are good, and if we are not good, it doesn't stand. It means it's only imaginary, not practical. It's not it's not easy to realize that we fail in quality because we think we do quality. Importance of talk is that there are so many topics, but all act together. It's only for information that I write every topic, because you have to know, and every one of us has to know whether we are engineers or we are not engineers. Engineering is gross title, and before that it life, that is field, and that is civil. Quality and safety work together, and you can say communication and coordination work together. Construction and design work together. Design is parent and construction is, you can say, a kid that has to grow. And of course, methods means how to bring it up, and contracts, we can say, it's a medium of how to work, how to create something. What's mechanism of creation? What's mechanism of converting designs through construction into reality? We have to understand this fact. I always put previous videos, some videos, references on text of video. You can, if you have an intention to go to last videos. For example, in this I put since month of August. I am now from this screen, and quality, which is an important task. This file I often put on for reference, for freshing your memory, that I'm not forgotten, and you also should not forget what is value of quality, what is the responsibility of engineers, and what is interesting to analyze problems in life. And if we can't analyze, we don't know what to do then. Analysis is such a formula, you can say. It's a kind of state of work where we imaginary by imagination
We by imagination break something, and after breaking it we know, just like we see on detailing and drawings, this is plan and this is elevation. Then we don't break anything because plan is there and we see this front, this is right, this is left, or this is rear elevation, or this is three-dimensional view. But when we want to see details, we have to say, okay, take a section here or section through this line, section A, section B, section likewise, and we have to provide details. That means there is no detail, there exists no detail, but we imagine there must be something and we provide section and say this is detail at this section. Same thing you can say, we have to, this is a kind of sectional analysis, because plan is not analysis and elevations are not analysis. Sectional analysis gives something that here I want to see this, I want to provide this. That's the important point. Analysis, which is very important part in engineering as well as in life. You see, you must have seen debates, and you can say displays of some problems on television or else or in papers, newspapers, analysis, or we can say editorials, whatever you can say, that brings you to some information that's based on you can say complete understanding of that subject. If analysis is right and analyst person is having enough capacity to project problems, questions, and give answers or assumptions, or you can say evidences, whatever, that refers to thinking and concentration of extracting valuable power. Our thinking capacity has no measurement. It has no defined volume. It is massive, or it has no limits, you can say. It's only power with human being, that thinking, or you can say it is power of contemplation, or you can say it's power of natural procedures. I think no one can stop thinking if one has conscious mind and conscious state of heart. Thinking cannot be stopped because it is power. But thinking in which way we go or you go, it depends on that. If you think to how to commit a crime, you can think that way. If you think how to do some positive work or some constructive work or some work that helps others, supports others, it's different. Constructive work is always very powerful, and behind that constructive work, attempts to of a construction, thinking for that, it is very powerful, means it's a resource that you cannot procure from somewhere. It is available inside you, inside everybody, inside me. And thinking in which we concentrate, we move further and further, and as much thinking as you spend, you get more and more information, because thinking multiplies, thrives, and you go inside that. Thinking, you can say, is a dream, and it gives you power, and when you input your data, results do come in. It leads to concentration, and then it becomes a power or a powerhouse that can be used for essentials. It is very difficult, and some people say, I cannot think, I could not think, or I shall not think. Thinking is beyond your control because it's not physical. It is rather, you can say, mental. Mental
has value. Thinking you cannot bar. If you want to find solutions, if you want to find solutions to your very difficult problems or ordinary problems, you have to think. It's very common word, and this applies to those who have minds and who do not want to use mind, they want to sleep. There's difference. They can think only very limited. If they see problems, they can say, okay, there's a problem. Without seeing problems, they cannot, you can say, they cannot, you can say what I should say, intuit problem. Intuition of problem is actually vision, view. When we design structures, you think it is physical. No structure design is physical. And not only structural design, but also all other designs can never be called physical. The designs are created in physical form, but that form is dependent on materials and technique. But that technique and those materials can be procured, techniques can be procured, but formation of techniques and formation of procedure of designs cannot be procured. Even if it is available, we have to think on that also again and again for trial. So designs, you can say, is originally a product of thinking and contemplation, while prosecution of works is different. You can say methods to prosecute work can be thought of. What we call applications must be effective. These are combinations, applications, you can say, results as a combination of thinking and applying. You may say it is your power of thinking or concentration and then application of that using materials and using resources. So we have to be very clear about this. Engineering is a domain, in fact, domain of life. It's not engineering branch, it's life domain, just like medical is life domain. We have to conform to our designs, we have to conform to our requirements, and if we do not conform, we do not value designs, we do not value ourselves, our attempt. Because one who gives designs, there is something behind that. It's not copying and paste, and if one who does copy and paste, that person can't be called designer. No carelessness, no ignorance work in designs, and if you say we do not think and do designs or copy paste, it indicates incompetence of that person who designs. And I can say that such person is nothing but redundant. हमको समझना होगा, सोचने की शक्ति की वैल्यू देनी होगी, क्योंकि सोचने की शक्ति खरीदी नहीं जा सकती, सोचने की शक्ति कोई किसी को दे नहीं सकता। सोचने की शक्ति आपकी अपनी शक्ति से आती है, आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से, आपकी मेहनत से शक्ति आती है और ये बढ़ती जाती है यदि हम इसको सही प्रकार से उपयोग करें। आप नींद में भी होंगे तो भी ये शक्ति काम करती है, ये इतनी एफिशिएंट है, इतनी पावरफुल है कि आप इसको आसानी से छोड़ नहीं सकते। आप छोड़ना भी चाहें तो ये आपको नहीं छोड़ेगी। और आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग वर्ल्ड में या दूसरे ऐसे व्यवसाय वृत्तियाँ जहाँ सोचना ज़रूरी होता है काम करने के लिए, वहाँ ये शक्तियाँ बहुत पावर से काम करती हैं और इन सोचने की शक्तियों की ही प्रकार से हम कहते हैं विकास होता है, अनुसंधान होता है और यू कैन सर्च होती है। और जब ये समझ आ जाएं, हमारे को समझ आए कि हमें क्या करना है, तो बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। क्वालिटी
गुणवत्ता पाई जा सकती है और क्वालिटी पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम ये सोच लें कि क्वालिटी पानी है, गुणवत्ता पानी है, सही प्रकार से काम करना है, कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं इस विश्व में जो आपको उस काम करने से रोक सके। आपके आपके कह सकते हैं अपनी सोच के ऊपर है, आपकी अपनी शक्ति के ऊपर है, आपकी अपनी दृढ़ कल्पना और दृढ़ विश्वास के ऊपर है, या आप कितना अच्छा बनाते हैं अपने आप को। क्योंकि जब आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं तो आपकी ये गुणवत्ता कहलाती है। उसी प्रकार से आप जो भी काम करें उसे गुणवत्ता के आधार पर करें तो आप एक अच्छे मानव कहलाएंगे, अच्छे नागरिक कहलाएंगे, अच्छे इंजीनियर हैं तो इंजीनियर कहलाएंगे, अच्छे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर कहलाएंगे, या किसी और वृत्ति में आप हैं तो वो कहलाएंगे। इंजीनियरिंग एक बहुत सामान्य शब्द है, कह देते हैं जी इंजीनियर है, लेकिन इंजीनियर का मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। इंजीनियर का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं। इंजीनियर का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क का किस तरह से प्रयोग किया जाए, हमारे मस्तिष्क की शक्ति को नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा दिए गए पदार्थ, मटेरियल्स या दूसरे सोर्स, उनको किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में लाया जाए और उनको अच्छे से अच्छा बनाया जाए। इंजीनियरिंग का मतलब वही होता है। इंजीनियरिंग का मतलब काम कर देना ही नहीं है। किसी को अधिकार नहीं है विश्व में कि वो जो प्रकृति के दिए हुए पदार्थ हैं उनको ख़राब कर दे, उनको बेकार कर दे, जैसा हमने किया। पॉल्यूशन एक वही परिणाम है जो कहता है कि इंजीनियरिंग का अब्यूज़ किया गया। इसी प्रकार से करोड़ों गाड़ियाँ रोज हम ही तो इसके लिए उत्तरदायी हैं, कोई और है क्या? सोचिए, अगर हम इतना भी नहीं सोच सकते और हम उसी दुनिया में हमको इकोनॉमी से लाना है और इकोनॉमी से इकोनॉमी ख़राब कर रही हैं, बड़े दुख की बात है। इकोनॉमी हमने की, अर्थव्यवस्था को सुधारा, वो भी प्रकृति की वजह से, क्योंकि अर्थव्यवस्था प्रकृति पर निर्भर है और उसी अर्थव्यवस्था दिया। एक इकोनॉमी की वजह से कारण हमने दूसरी इकोनॉमी क्रिएट कर दी, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी को इकोनॉमी ख़राब कर रही। और आज भी वही हाल है, हम वहाँ से पीछे नहीं हटना चाहते। पूरा विश्व वही है, किस तरह से अपना ग्रोथ किया जाए, किस तरह से सब कुछ है, वही एक दिमाग का यदि हम समझते हैं एक अच्छी कार होना या हेलीकॉप्टर होना या हर रोज़ हवाई जहाज़ में जाना या वो सब लग्जरी और विलासिताएँ होना, यही इकोनॉमी है, यही क्वालिटी है, तो ऐसी क्वालिटी आप ही को बधाई हो जो इन चीज़ों में विश्वास करते हैं। मुझे तो कई बार पैदल चलना ज़्यादा अच्छा लगता है बिना गाड़ी के, बिकॉज पैदल चलने से कम मैं दूषित तो नहीं कर रहा वातावरण को। हम पटाखे चलाते हैं, फायरवर्क्स चलाते हैं, हज़ार सी बात होती है, शोर मचाते हैं और हम मना रहे हैं खुशी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सोचते हैं कि पटाखे चला के, फायरवर्क्स चला के हम खुश हो जाते हैं। आप खुश किस लिए हो रहे हैं कि आप दमे को रास्ता बना रहे हैं, आप सांस लेने की प्रॉब्लम कर रहे हैं, समस्या कर रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं, तो आपका दिमाग पागलों वाला दिमाग है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, पूरे विश्व के लिए। किस बात का फायरवर्क्स चला रहे हैं आप? हवा को ख़राब करने के लिए, और फिर कहते हैं हम खुश हो रहे हैं। आप हवा को ख़राब करके कैसे खुश हो सकते हैं?
आप मीथेन सूंघेंगे, आप हाइड्रोजन सल्फाइड सूंघेंगे, आप कार्बन डाइऑक्साइड सूंघेंगे, आप कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघेंगे। ये बातें आती हैं समझने के लिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सच्चाई है। हम जानने के बाद भी नहीं जानते। We do not want to know even after knowing facts. And same issue again I am saying, communication and coordination apply to such requirements. I have seen and I understand that 95% people do not have any interest on these issues. Relative interest among these people is only survival, economy, etc., which are basic requirements. Indeed, food is basic requirement, shelter is basic requirement, clothing is basic requirement. And for that, there are people